अगर आप जॉब इंटरव्यू के लिए तैयारी ले रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इमोशनल इंटेलिजेंस की रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर। इमोशनल इंटेलिजेंस एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जो आज की डेट पे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कंपनी, हर जगह पे इसके बारे में ट्रेनिंग दिया जाता है। और इससे पहले जो भी कैंडिडेट जॉब ढूंढते हैं उनके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस की नॉलेज है या नहीं है, उस चीज़ को हर किसी इंटरव्यू में चेक किया जाता है। आप किसी भी कैटेगरी की मिड मैनेजमेंट, सीनियर मैनेजमेंट या लोअर मैनेजमेंट या फिर नॉन मैनेजमेंट वाले, नॉन सुपरवाइजरी जॉब वाले पे भी अगर आप इंटरव्यू देने जाओगे तो एक या दो क्वेश्चन तो इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में रहेगा ही रहेगा। ये वीडियो आप बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि एक बार की आपकी टाइम इन्वेस्टमेंट और जिंदगी भर की आपकी लर्निंग आप लेके जा सकते हो। अगर आपने इमोशनल इंटेलिजेंस पे नॉलेज हासिल कर लिया है तो आप किसी भी कंपनी में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप बहुत अच्छा पोजीशन पे जॉब ले सकते हो। तो आइए देखते हैं 10 ऐसा इमोशनल इंटेलिजेंस की रिलेटेड क्वेश्चन और उसके सैंपल आंसर। इससे पहले कि मैं आपको 10 क्वेश्चन आंसर बताऊं, आपसे रिक्वेस्ट है आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम लाइफ चेंजिंग वीडियोस बनाते हैं, आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। तो पहला क्वेश्चन है, कैन यू टेल मी ए टाइम व्हेन यू हैड टू मैनेज ए टीम मेंबर्स इमोशंस ड्यूरिंग ए डिफिकल्ट प्रोजेक्ट। इसका आंसर आप दे सकते हो, इन माई प्रीवियस रोल आई हैड ए टीम मेंबर who was feeling overwhelmed and frustrated with the project. I took the time to listen their concerns and empathized with their feelings. I then worked with team to break down the project into smaller, manageable tasks and provided guidance and support as needed. The team member was able to complete the project successfully and their confidence and motivation improved significantly. Second question है, how do you handle stress and pressure in the workplace? इसका आंसर है, आई प्रायोरिटाइज सेल्फ केयर एंड टेक ब्रेक्स व्हेन नीडेड टू मैनेज स्ट्रेस. आई ऑल्सो फोकस ऑन फाइंडिंग सॉल्यूशंस rather than getting bogged down by problems. Additionally, I communicate openly with my team and manager to ensure that everyone is aware of my workload and any challenges I am facing. Third question है, can you describe a situation where you had to navigate a conflict between team members? इसका आंसर आप दे सकते हो, इन माई प्रीवियस रोल आई हैड 2 टीम मेंबर्स हु वर इन कन्फ्लिक्ट ओवर ए प्रोजेक्ट. आई brought them together to discuss the issue and facilitated a concern that allowed them to express their concern and listen to each other's perspective. I helped them to identify common goals and work together to find a solution. The conflict was resolved and the team members were able to work together effectively. Fourth question है, how do you build relationships with your colleagues and manager? Answer है, I believe that building relationships is about being genuine, empathic and respectful. I take the time to get to know my colleagues and manager and I am interested in their perspective and experiences. I am also proactive about communicating and collaborating with them to achieve common goals. Fifth question है, can you tell me about a time when you received feedback or constructive criticism? इसका आंसर है, in my previous role, I received feedback from my manager on my communication style. I listened to the feedback and asked questions to clarify the areas of improvement. I then worked on developing my communication skills and I sought feedback from my manager and colleagues to ensure that I was making progress. Sixth question है, how do you handle a situation where you have made a mistake or failed at a task? Answer है, I own up to the mistake and take responsibility for it. I then reflect on what went wrong and identify what I can do differently in the future. I also communicate openly with my team and manager to ensure that everyone is aware of my situation and what I am doing to correct it. Seventh question है, can you describe a situation where you had to adapt to a change in plans or priorities? आप दे सकते हो, in my previous role, I had to adapt to a change in project priorities. I was flexible and willing to adjust my plans to meet the new priorities. I communicated openly with my team and manager to ensure that everyone was aware of the changes and what was expected of them. Eighth question है, how do you handle a situation where you are working with someone who has a different work style or perspective?
तो इसका आंसर आप दे सकते हो, आई बिलीव डेट डाइवर्सिटी ऑफ थॉट एंड परस्पेक्टिव इज एसेंशियल फॉर इनोवेशन एंड ग्रोथ. I am open minded and willing to listen to and learn from others. I also communicate openly and respectfully to ensure that we are able to work together effectively. Ninth question है, can you tell me about a time when you had to make a difficult decision? इसका आंसर है, in my previous role, I had to make a difficult decision about whether to invest in a new project. I gathered data and consulted with colleagues before making a decision. I then communicated the decision to the team and stakeholders, and I was transparent about the reasoning behind it. 10th question है, how do you prioritize your own emotions well-being in the workplace? इसका आंसर आप दे सकते हो, I prioritize self-care, take breaks when needed to manage stress. I also communicate openly with my team and manager to ensure that everyone is aware of my workload and any challenges I am facing. Additionally, I am proactive about seeking support and resources when I need them. इस 10 क्वेश्चन के अलावा इमोशनल इंटेलिजेंस के 5 कॉम्पिटेंसीज है जिस पे आपको काम करना है. पहला कॉम्पिटेंसीज है सेल्फ अवेयरनेस. इसमें आपकी खुद की जो इमोशंस है, स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, इसको पता करना है. नेक्स्ट है सेल्फ रेगुलेशन. इसमें क्या है कि आपकी खुद की इमोशंस को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो, इस पे सेल्फ रेगुलेशन सीखना है आपको. थर्ड है मोटिवेशन. इसमें क्या है कि आप खुद कैसे मोटिवेट रहते हो प्लस टीम को कैसे आप मोटिवेट रखते हो, उसको आपको सीखना है. नेक्स्ट है एम्पैथी. एम्पैथी में क्या है कि किसी और की फीलिंग्स को, इमोशंस को आप कैसे अंडरस्टैंड करते हो, कैसे किस तरीके से आप उस चीज़ को समझते हो, उसको आपको सीखना है एम्पैथी में. नेक्स्ट है सोशल स्किल. इसमें क्या है कि आप किसी और के साथ मिलके कैसे काम करते हो, उनकी इमोशंस को समझ के, सोच के आप कैसे काम करते हो, ये आता है सोशल स्किल पे. तो ये 5 कॉम्पिटेंसीज है. अगर आप इसमें काम करोगे तो आप इमोशनली एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बनोगे. अगर आपको इमोशनल इंटेलिजेंस के रिलेटेड या फिर इंटरव्यू के रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके हमसे ज़रूर पूछना. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बेस्ट ऑफ लक फॉर योर इंटरव्यू.